हमारी टीम, प्लास्टिक सर्जन्स की टीम, जनरल सर्जन्स की टीम जाके निःशुल्क सेवा से हमने वहाँ पे सर्जरी की और मतलब ये कैंप हमारे 3-4 बार हुए और हर दिन हमने कम से कम 30 से 40 पेशेंट वहाँ पे ऑपरेट किए, मेलघाट के इलाकों में और गढ़चिरौली में सर्च फाउंडेशन के अंतर्गत। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी पूरे साल भर चलती रहती है और मेरी पूरी आशा है कि मैडम इन्हीं एक्टिविटीज़ को आगे चलाती रहेंगी। ये हमारी एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स नागपुर जो है, ये काफ़ी पुरानी संस्थान है, करीबन 1982-83 में इस्टेब्लिश हुई थी। मैडम इस संस्थान के 34th प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं और मैडम मेरे टीचर भी हैं, मेरे गाइड भी हैं, मैडम ने मुझे पढ़ाया भी है। Ahead in this, and we are preserving bodies for a good cadaveric workshops, which is very useful for upcoming surgeons for a practice and for learning fields. So we all are there for organ donation and body donation, so that we spread this news or the way how it can be done, how it can be decided, so that society understands it well and take the action. 26-27. Dr. Divish, as he told, has kept a big task before us. To climb that task is a Herculean task for us, and I promise that I will do my best to at least reach his goal. Madam's main aim of organ donation awareness, we will try our best, either by podcast or through media, and awareness in public forum like Lions Club, Rotary. They are also joining us in spreading the awareness of organ donation, which is very important because we are lacking in major organ donation. Though it was only cataract previously, cornea, but now liver, kidney, and even heart have come up nowadays. So we will try our best regarding social activity, blood donation camps we are also going to take. We are also planned public awareness regarding CPR, and we also have an aim of going to rural, Gaon Chalo. So we will take surgical camps or diagnostic camp at least. डॉक्टर आरती तिरंगे. आय एम बेसिकली गॅस्ट्रो अँड लिव्हर सर्जन. तर यावर्षी हे जे ऑर्गन डोनेशनचं आमचं अवेअरनेस कॅम्प आहे, सो ह्यानी आम्ही जे नॉर्मल लोक आहेत, बेसिकली नॉर्मल लोकांना त्याच्याशी रिलेटेड अवेअरनेस नसतो की हे याचा ऑर्गन डोनेशनचा फॉर्म कुठे भरायचा, त्याचं लिगॅलिटीज काय आहे, की तुम्ही कोणाला कॉन्टॅक्ट करू शकता, कुठल्या पण हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा कोणाची डेथ होते तेव्हा हे सगळं कुठे आपण फुलफिल करू शकतो. आणि इवन जसं इंडियामध्ये ओव्हरऑल लोकांचं ऑर्गनचं रिक्वायरमेंट इज व्हेरी मच ॲज कम्पेअर्ड टू जेवढे डोनेशन्स होतात आहे. तर यावर्षी आम्ही जितकं अवेअरनेस क्रिएट करू, आय थिंक वी कॅन इम्प्रूव्ह द ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल हू अँड कॅन इन्क्रीज द अवेअरनेस इन दिस. आणि ह्या प्रकारे जसं ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आहे, आपण दरवर्षी समजा असं ऑर्गन डोनेशनच्या अवेअरनेसनी ऑर्गन डोनेशनचं फॉर्म्स भरून रजिस्ट्रेशन असे कॅम्प्स घेतले किंवा अवेअरनेस कॅम्प्स घेतले, तर आपण या वर्षीपासनं हे सगळं ऑर्गन डोनेशनचं अवेअरनेस वाढवून